Hello everyone. Very good morning, one and all. Am I audible and visible? Everyone, please confirm my visibility and audibility. Am I audible and visible? Okay. A very good morning, one and all. हम ये डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू पाइथन सब्जेक्ट क्रैश कोर्स में डिस्कस कर रहे थे, सीख रहे थे. एज ए पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट स्टैक, क्यू, हैश टेबल्स एंड लिंक्ड लिस्ट्स. सो लास्ट क्लास में हमने लिंक्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस किए थे. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट? सिंगली, डबली, सर्क्यूलर. ए लिंक्ड लिस्ट में इंसर्ट करना या ऐड करने का, डिलीट और रिमूव करने का ऑपरेशंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमको गेट एग्जाम में वो ऑपरेशंस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको डेफिनेटली पूछने का चांसेस बहुत है. बिकॉज इन द अर्लियर CS पेपर्स इफ यू लुक एट, many times we have got questions asking for the time complexity for inserting into singly list, doubly list, in different cases. So we have discussed in that perspective, right? So with which linear data structures part is done. तो आज हम डिस्कस करने वाला है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में. आज और कल ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज ट्रीज. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस ट्रीज कॉन्सेप्ट से हमको 40% ऑफ द वेटेज हम गिन सकते हैं. अगर मान लो डेटा स्ट्रक्चर से 10 मार्क आपको गेट एग्जाम में आए, तो मिनिमम 4 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम ट्रीज कॉन्सेप्ट. 4 से ज्यादा भी हो सकते. सो वी कैन से दिस इज द मोस्ट वेटेज टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. सो टुडे एंड टुमारो 2 classes I am dedicating for this trees concept. So everyone please focus, try to learn this concept with uttermost interest, क्योंकि ये आपको गेट एग्जाम में यूजफुल होने वाला है. तो आज हम ये ट्रीज के बारे में, पहले ट्रीज में थोड़ा टर्मिनोलॉजी हम आदत होना चाहिए, तभी हमको आगे सब कुछ समझ में आएगा. सो वो टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे. उसके बाद what are different types of binary trees, and then tree traversals, and we have some theorems or formulae or equations with respect to binary trees. So आज हम इतना सारे डिस्कस करेंगे. कल हम बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. सो वंस अगेन एवरीवन प्लीज कंफर्म फॉर प्रोसीड. आर वी गुड टू गो? Can we start today's class? Everyone please confirm once again. सब लोग
कंफर्मेशन दे दीजिए प्लीज। Okay. So now, firstly, to start with, what is a tree? It is a non-linear data structure. A tree is a non-linear data structure. क्यों? आप लिंक्ड लिस्ट, अरे, स्टैक, क्यू, हैश टेबल, इनों से कुछ भी आप उठा लो, कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर आप उठा लो, सारे एलिमेंट्स हम एक लेवल पे ही या एक लाइन पे ही रिप्रेजेंट कर लेते, इसीलिए उसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल के कह सकते। लेकिन ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हम एलिमेंट्स को अलग अलग लेवल्स में रिप्रेजेंट करते, इसीलिए हम ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, सेट्स, मैप्स, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल के बुला सकते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और ये ट्री को हम और एक नाम भी दे सकते, दैट इज एसाइक्लिक ग्राफ। मतलब एक ग्राफ विदाउट साइकिल। साइकिल मतलब क्या है? क्लोज्ड सर्क्यूट नहीं, ओपन ग्राफ। एक ग्राफ विथ नो क्लोज्ड सर्क्यूट। ग्राफ में हमको क्लोज्ड सर्क्यूट रह सकता है, मैंडेट तो नहीं, यू कैन। और ग्राफ कैन ऑल्सो बी ओपन। सो एवरी ग्राफ, you can say every tree is a graph, but every graph is not a tree. Okay, so every tree is a graph. Which graph? Acyclic graph. Without cycle, you can imagine. So in trees, elements, we call them as nodes that are arranged or represented or organized into multiple levels. मल्टीपल लेवल्स में ये ट्री का एलिमेंट्स को अरेंज कर लेते या रिप्रेजेंट कर लेते या ऑर्गेनाइज कर लेते। ये एलिमेंट्स को हम क्या बोल के कह सकते हैं? नोड्स। ओके, नोड्स। As we represent the nodes in multiple levels, it is also said as, this tree is also known as hierarchical data structure. Hierarchical data structure. सर रियल टाइम में हमको ये डेटा स्ट्रक्चर कहां दिखेगा? इसका एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पे। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ या फाउंडर रहते, फाउंडर के अंडर सीईओ करके, सीएफओ करके, सीओओ करके, ऐसा बहुत सारे टॉप लेवल एम्प्लॉइज हो सकते। इसके अंडर मान लो सीनियर मैनेजर्स या डायरेक्टर या प्रेसिडेंट, ऐसा कोई भी आप इमेजिन कर लो।
इसके अंडर मैनेजर्स हो सकते, वो मैनेजर्स के अंडर टीम लीडर्स के अंडर सीनियर सॉफ्टवेयर लेवल इंजीनियर्स, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उसके अंडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ऐसा आप एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन अगर बताना चाहे तो आपको एक ही ऑप्शन है, ट्री। ऐसी आप फेसबुक या ट्विटर ऐसा एक सोशल नेटवर्किंग अगर आपको रिप्रेजेंट करना चाहे तो सोशल नेटवर्किंग में ये आपका अकाउंट है, ये अकाउंट मल्टीपल अकाउंट्स के साथ कॉमन लिंक्ड है। इससे आप पोस्ट कर सकते, लाइक कर सकते, कमेंट कर सकते, टैग कर सकते, ऐसा आप जो भी ऑपरेशंस कर सकते आपके अकाउंट थ्रू, ये सारे ऑपरेशंस हम ऐसा रिलेट करके बता सकते। सो ये पूरा सोशल नेटवर्किंग को भी हम ऐसा ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते। सो आप ये समझ लेना, डेटा स्ट्रक्चर मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, एक मेथडोलॉजी, प्रोसीजर। वो प्रोसीजर, वो मेथडोलॉजी आपको कहीं जगह पे दिखेगा, वहां आप कह सकते ये डेटा स्ट्रक्चर हम यहां फॉलो कर रहे बोल के। अगर आप डेटा को लास्ट इन फर्स्ट आउट में ऑपरेट कर रहे कहीं जगह पे, आप कह सकते हैं वो स्टैक है, क्योंकि आप स्टैक ऑर्गेनाइजेशन उधर अप्लाई कर रहे, उधर फॉलो हो रहे। ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को या एम्प्लॉय डेटाबेस को या ऐसा सोशल नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते वक्त आप क्या डेटा स्ट्रक्चर का यूज रिप्रेजेंटेशन यूज करते, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो ट्री डेटा स्ट्रक्चर हैज मेनी रियल टाइम applications. Now this tree data structure uses follows some terms, so we definitely need to be aware of those terms or habituated with those terms. What are they? In a tree, suppose let me take a tree like this, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Just assume this is one of the trees. Okay. In a tree, every element which is encircled, you see, we are calling it as what? Node, or there is another term we call it as what? Vertex. Every node or every element is called as vertex, and every link that is connecting any two nodes, you call it as edge. What do you call it as? Edge. So each link connecting two nodes
connecting any two nodes, that is what you call it as edge. And when you see one node is connected to multiple other nodes in the descending manner. So whenever you see a descending edge or a falling edge from one node to the other nodes, then you call it as parent node, to which it is connected to, they are called children node. So these are the children of A. So A is having B, C, D as children. B is having E and F as children. So these are the children node of B. G, H, I, J, these are what? Children of C. K is child of D. Like that, you can understand what nodes are children for which node. Now, a node without parent, that is what we call it as root node. कौन सा नोड को पेरेंट नहीं रहते उसको हम कह सकते व्हाट? रूट नोड. सो A is having no parent. देखो A is the parent for BCD, बट A का पेरेंट कौन है? A के अबव कोई है नहीं. सो A को हम कह सकते रूट नोड. Okay, and you can divide the nodes into two types. One is internal nodes or non-leaf nodes. Internal nodes or non-leaf nodes, and the other will be external nodes or leaf nodes, or leaf nodes, or you can say terminal nodes also. इसको नॉन टर्मिनल नोड्स भी कह सकते. नॉन टर्मिनल नोड्स बोल के भी आप बुला सकते. So what are leaf nodes or external nodes or terminal nodes? Node without child. A node that has zero children. That has zero children. You can say it as leaf node. A node that has zero children is called as leaf node. So all leaf nodes, that means which has children, you can call as non-leaf nodes or internal nodes. So you can understand root node is also internal node. Root node is also a type of internal only. So we have only two types of nodes, internal, external, or leaf nodes, non-leaf nodes. So here what are the leaf nodes in this example? In this example, what are different leaf nodes?
E, F has no children. So E is a leaf node. F is a leaf node. G has no child. L, M has no child. I has no child. O has no child. Q has no child. R has no child. S has no child. K has no child. So the nodes that have no children are called leaf nodes. All the other are non-leaf nodes. So what are the examples for non-leaf nodes? A, B, C, D, H, J, N, P. These are all non-leaf nodes because they have children. Okay, next. Nodes, we can say the number of children per node is what we can call as degree of the node. कितना चाइल्ड है एक नोड को, वो हम कह सकते हैं डिग्री. सो इफ आई राइट द डिग्रीज, what is the degree of A 1, 2, 3? Degree of B 2. Degree of C 4. Degree of D 1. Degree of K 0. Degree of M 0. Degree of N 2. Degree of P 3. Degree of E 0. So like this, the nodes have children, that number of child per node is called degree. I have written for some nodes, you can understand for the others. So leaf nodes का डिग्री क्या होगा? 0. So आप लीफ नोड बोले तो ऐसा भी समझ सकते, ये नोड whose degree is 0, such node you can call as leaf node. Okay. Now, what would be the degree of a tree? Degree of a whole tree हम कैसा गिन सकते? So degree of a tree is equal to maximum of all the degrees of nodes. Maximum of degrees of all nodes is called degree of a tree. So in this example, what is the maximum? You can see it is 3, 0, 2, 4, 1. What is maximum? 4. So what is the degree of complete tree? 4 is the degree of a tree. Okay, and the nodes that has common parent, the nodes with common parent, they are said to be siblings. So B, C, D have a common parent. So B, C, D are siblings. G, H, I, J are siblings. E, F are siblings. Q, R, S are siblings. L, M are siblings.
So the nodes that have common parent are said to be sibling nodes. Okay? Am I clear so far? Everyone, please respond. Am I clear so far? Okay. Now, with respect to trees, we should understand level, depth, and height. These three terms we should understand. These are very, very, very important. Any numbering by default starts with 0. Any numbering by default starts from 0. Level numbering, या depth numbering, या height numbering. So level is what you see. Root level starts from 0 and the level numbering goes on till leaf level. Level numbering starts with 0 from root and continue till leaf level. And how do you define depth? Depth of a node, that is equal to, how do you define depth? It is the number of edges from root node to रेस्पेक्टिव नोड. रूट नोड से वो नोड तक कितना एडजेस है वो हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ ये नोड. And what is height of a node? This is the number of edges. The number of edges from that respective node. कौन सा नोड का हाइट गिनना चाहते वो नोड से रूट नोड तक वो नोड से लीफ नोड तक in the longest path. In the longest path. To understand this, let us have an example. A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Suppose this is what the tree I have taken. Now, what would be the level of these nodes? Level numbering starts with root and continue till leaf. So, A is said to be at level 0, B is said to be at level 1, B, C, D. All these nodes are said to be at level 2, level 3, level 4, and U is said to be at level 5. So these are the levels. Now, what will be the depth? Depth is what? Number of edges from root node to respective node. A to A, how many edges are there? 0. B to B, B to A, 1 edge. C to A, 1 edge. D to A, 1 edge. E to A, 1, 2. So, E depth is 2. F to A, 2. G to A, 2. H to A, I to A, J to A, K to A. 2 edges. L से कितना है? 1, 2, 3, 3 edges है. M से भी 3, N से भी 3. So like this you can calculate depth of each node. अगर आप ऐसा देखें तो लेवल एंड डेप्थ हमेशा सेम रहते. देखो P का डेप्थ क्या है? 3. P का लेवल 3. J का डेप्थ 2, J का लेवल 2. U का डेप्थ 5, U का लेवल भी 5. So at the node perspective, from the node perspective, depth of a node will be always equal to level of a node. अब हाइट कैसा गिनते हम? हाइट को कैसा गिनते? व्हाट इज हाइट? इट इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव नोड टू लीफ नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ. यू से, यू इज लीफ, सो यू का हाइट 0. एस इज द लीफ, एस का हाइट 0. So every leaf node height is 0. Every leaf node height is 0. So leaf node is said to be at height 0. Now R,
पहले टी, लीफ नोड से वो नोड तक कितना एडजस्ट है, यू से टी तक एक एज, सो टी इज सेट टू बी एट हाइट 1। नाउ आर देखो, आपको अभी लॉन्गेस्ट पाथ का मतलब समझ में आएगा। यस ही एक लीफ है, यू भी लीफ नोड है, सो यस से गिने तो नंबर ऑफ एडजेस कितना है, एक। यू से गिने तो कितना है, 2। सो विच इज मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा था, यू टी टी आर। सो द नंबर ऑफ एडजेस फ्रॉम लॉ इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम लीफ नोड टू दैट नोड, सो आर का हाइट हो गया 2। नाउ एफ का हाइट देखो, यहां से गिने तो 1 एज है, यहां से भी 1 है, सो मैक्सिमम इज 1। जी हाइट इज 1, एच हाइट इज 1, पी हाइट इज 1, जे क्यू से देखे तो 1 है, यस से देखे तो 2, यू से देखे तो 3, सो विच इज मैक्सिमम, 3। So J height is 3 and then B height देखो, E से देखे तो it is at height 1, 2, 2, so B height is 2। C यहां से या यहां से कैसा देखे तो B height 2 ही है। From here 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So D is said to be at height 4. Like this, you can calculate height of every node. Right? So depth level सेम होते नोड पर्सपेक्टिव में, लेकिन हाइट सेम होने का कोई जरूरी नहीं था। देखो आप, H का हाइट 1, डेप्थ 2, C का हाइट 2, डेप्थ 1, P हाइट 0, डेप्थ 3, E हाइट 0, डेप्थ 2। सो फ्रॉम नोड पर्सपेक्टिव depth height need not to be same, they can be same sometimes। आप देखें तो is there any node that has both depth and height same? I think no, ये एग्जाम्पल में नहीं है, लेकिन हो सकते, डेप्थ हाइट सेम हो सकते, बट it is not mandatory, depth height need not to be same। but अगर आप होल ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो लेवल ऑफ ए ट्री will be equal to depth of a tree will be equal to height of a tree। होल ट्री का क्या हाइट है बोले तो, ये पूरा होल ट्री का आप देख लो क्या हाइट है, मैक्सिमम हाइट देखना है। रूट का हाइट देखो 5, सो हाइट ऑफ दिस ट्री इज 5। डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ देखो 5, लेवल मैक्सिमम लेवल देखो 5, सो ये ट्री का हाइट क्या था, 5, डेप्थ 5, लेवल 5। ऐसे ट्री पर्सपेक्टिव से जब आप सोचते, लेवल बोलो या हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, वो तो सेम ही होगा, लेकिन नोड पर्सपेक्टिव से आप गिनना चाहे तो डेप्थ एंड लेवल ही सेम होते, हाइट सेम होने का जरूरी नहीं था। हाइट कैन बी डिफरेंट।
Okay, am I clear? Am I clear? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक बात सब क्लियर है या नहीं? प्लीज रेस्पॉन्ड. रेस्पॉन्स दे दीजिए बेटा. ओके, गुड, थैंक यू. नाउ now let us understand tree traversals. Before this, types of binary trees. First of all, what is a binary tree? What is a binary tree? Binary मतलब two. So a tree whose degree, a tree whose degree is less than or equal to 2, such a tree is called binary tree. मतलब क्या है? इसका मतलब है a tree in which each node can have maximum 2 children. Means it can have 0 child or 1 child or 2 children. Maximum is 2. So किसी नोड का डिग्री 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड कैन बी 2. 2 से कम हो सकते, मतलब 0 हो सकते या 1 हो सकते या 2 हो सकते. If every node degree is less than or equal to 2, then you can call such a tree as binary tree. Binary tree. So in these binary trees, there are several types. Full binary tree, complete binary tree, perfect binary tree, skewed binary tree,
बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप, बाइनरी सर्च ट्री में ही हम ले सकते हैं बैलेंस्ड बीएसटी, दैट इज एवीएल ट्री एंड सो ऑन. We have several types of binary trees. In this, what is a full binary tree? Means, others, yes, number of nodes per child. Okay, that is called degree of a node. In all these degrees, when you take the maximum degree, that is called degree of a tree. Anyway, so what is a full binary tree? It is a binary tree in which each node can have either 0 child or 2 children. Either 0 child or 2 children. मतलब एक चाइल्ड नहीं होना चाहिए. No node must have 1 child. Then you can call it as full binary tree. What is complete binary tree? A binary tree in which nodes are filled. मैं एक सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूं. कंप्लीट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन अलग अलग फॉर्म में आपको दिख जाएगा, अलग अलग सोर्सेस में. मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको दे रहा हूं समझने के लिए इजीली. A binary tree in which nodes are filled from top to bottom, left to right. आप चिल्ड्रन ऐड करना चाहोगे, आप कैसा ऐड करना कहते हैं? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट. मतलब टॉप नोड को फिल करने के बाद बॉटम नोड को, लेफ्ट नोड फिल करने के बाद राइट नोड को. सो ये आप फॉलो करते जाओगे, उसको हम कह सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री. व्हाट इज परफेक्ट बाइनरी ट्री? It is a full binary tree in which all leaf nodes are at the same level. All leaf nodes must be at the same level. Then you can call it as perfect binary tree. I will give examples for all. Okay, thoda patience रहिए. What is a skewed binary tree? Skewed binary tree means a binary tree in which all nodes are having, all nodes मतलब except leaf node. Okay, all nodes are having either only left child, either only left child or only right child. मतलब हर नोड को एक ही चाइल्ड होना चाहिए, वो भी सारे नोड्स का चाइल्ड लेफ्ट ही होना चाहिए, नहीं तो सारे नोड्स राइट चाइल्ड ही होना चाहिए.
If all are having only left child, that is called left skewed binary tree. If all are having only right child, you can say it as right skewed binary tree. So, in the skewed, we can have either left or right. Next, binary search tree. What is binary search tree? It is a binary tree in which parent node value is greater than its left subtree values and less than its right subtree values. If the parent value is greater than left, less than right at each level, it is not only at the root level, at every level, if parent value is in between left and right nodes, then you can call it as binary search tree. Strictly speaking, this will be equal to also, but वो confusion आपको हटाना बोल के मैं वो equal to नहीं लिखा था, क्योंकि हमको क्वेश्चंस में भी मैक्सिमम इक्वल टू के बिना ही हमको वैल्यूज दे देते. सो दैट इज ओके. गेट एग्जाम के लिए हम लेस देन ग्रेटर देन से हम सीख सकते. देन व्हाट इज बाइनरी हीप? इट इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री in which parent value is greater than all the children or parent value is less than all the children. It must be a complete binary tree and parent value must be greater than all the children, left or right, or less than all the children. If parent value is greater than all the children, you will call it as max heap. Max heap. If parent value is less than all the children, then you can call it as min heap. Min heap. And what will be AVL tree? It is a balanced or a height balanced BST. AVL tree मतलब height balanced BST. Means it is a binary tree in which balance factors of each node must be in the range -1, 0, +1. Then you can call it as AVL tree or height balanced BST. And of course, we do have red black binary tree, segment tree, split tree. Like that, we have several other types of binary trees. But मैंने आपको important binary trees ही लिखा था. So ऐसा आप सारे binary trees का definitions एक जगह पे
आप रिफर कर सकते, इसीलिए मैं एक स्लाइड में सारे डेफिनेशंस आपको लिख के रखा। अब हम एग्जाम्पल देखते। Suppose I am writing only one node, just one node. Is this a complete binary tree? Filling from top to bottom, left to right. So yes, it is a complete binary tree. Is this a full binary tree? A node must have 0 child or 2 child. It has a 0 child. So it is a full binary tree. Is this a perfect binary tree? Yes, because it has leaf at the same level. Of course, एक ही node है. So definitely it is perfect binary tree. Is this a skewed binary tree? Yes. So it is all types of binary tree. You can say when there is a tree with only one node, it comes under all kind of trees. Okay. Next. Suppose I am taking a binary tree like this. Please observe. Is this a complete binary tree? See, filling from top to bottom, left to right. So, it is complete binary tree. Is this full binary tree? No, because full binary tree means every node must have either 0 child or 2 child. But you see, this node is having 2 children. Sorry, 1 child. So, it is not full binary tree. When it is not full, there is no question of checking perfect, because perfect binary tree means it must be full. So, it is not perfect. 𝐂𝐸𝐵, we have several types of trees. मैं बोला था ना, रेड ब्लैक ट्री है, स्प्ले ट्री है, सेगमेंट ट्री है, डीजेनरेटेड ट्री है, ऐसा बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रीज है. बी ट्री, बी प्लस ट्री, ऐसा. ठीक है. नेक्स्ट, सपोज if you look at this example, is this a full binary tree? Yes. You see, every node is having either 0 child or 2 children. So, it is a full binary tree. Is this perfect binary tree? No, because leaf nodes must be at the same level. So, it is not perfect binary tree. Is this complete? No, because see, without filling this node, you filled this node. So, it is not complete binary tree. Look at this. Is this complete binary tree? Yes. You have filled from top to bottom, left to right.
So it is complete binary tree. Is this full binary tree? Yes. Every node has either 0 child or 2 child. So it is full binary tree. Is this perfect binary tree? No. Because you see these two leaf nodes at one level, this is at another level. So leaf nodes must be at the same level. So we can say this is not a perfect binary tree. Next. Look at this. Is this a complete binary tree? Yes, because you filled from top to bottom, left to right. So this is complete binary tree. Is this full? No, because no node must have one child. So it is not full. Is this perfect? When it is not full, there is no question of perfect. So it is not even perfect. Okay. Let's see one more example. Is this a complete binary tree? No, because filling must be from top to bottom, left to right. If you look at this node, without left there is a right child. So it is not complete binary tree. Is this a full binary tree? No, because it must have either 0 child or 2 child per node. But this node has only one child. So it is not full binary tree. Is this a perfect? When it is not full, no need to check for perfect. So it is not perfect. Right? So let us have one last example. Look at this example. Is this a complete binary tree? Yes. You have filled from top to bottom, left to right. So it is complete. Is this full? Every node has either 0 child or 2 child. So it is full. Is this perfect? Yes, all leaf nodes at the same level and it is full. So it is perfect binary tree also. So इतना सारे एग्जाम्पल्स से हम क्या कह सकते हैं? Every perfect binary tree is full and complete. Every complete binary tree need not to be full, need not to be perfect. Similarly, every full binary tree need not to be complete or perfect. Every perfect binary tree is complete as well as full. You see, it is perfect, complete, full. It is perfect, complete, full. अगर एक ट्री परफेक्ट है तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, फुल भी होगा.
इसका मतलब ये नहीं है हर कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल होगा बोल के या परफेक्ट होगा बोल के। एवरी सीबीटी नीड नॉट टू बी फुल, इट इज सीबीटी बट नॉट फुल, इट इज सीबीटी बट नॉट फुल, इट इज सीबीटी बट फुल। तो ऐसा हर सीबीटी फुल होना बोल के नहीं, हर सीबीटी परफेक्ट बाइनरी ट्री होना बोल के नहीं। जब वो फुल नहीं होगा वो परफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो एवरी फुल बाइनरी ट्री फुल होगा, सॉरी एवरी फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट होगा या परफेक्ट होगा? नहीं। देखो ये फुल बाइनरी ट्री था बट इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट परफेक्ट। हियर ये फुल था बट परफेक्ट नहीं था, कंप्लीट नहीं था। लाइक दिस हम ये 3 कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। ओके, एम आई क्लियर सो फार? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। Please respond everyone. Okay. Now, with respect to trees, we have some formulae or equations or theorems. Before that, first let us complete tree traversals part. What is the meaning of traversal? First we should understand that. Then we can understand the tree traversal or graph traversal, whatever. So what is the meaning of traversal first? Traversal means it is the order in which nodes are accessed or visited. ट्री मतलब बहुत सारे नोड्स हो सकते, तो वो बहुत सारे नोड्स को कौन सा ऑर्डर में आप एक्सेस करोगे, in which order you access the nodes of a tree, that is called traversal. So there are basically सचिन, गेट डीए में डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सी में नहीं आएंगे क्या? नहीं बेटा, पाइथन में ही आएंगे, लेकिन कोड में कोड थ्रू क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेगा बेटा। डेटा स्ट्रक्चर्स में मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही मिलेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो ये बोल के, नहीं तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेगा ट्रीज से, या ट्रैवर्सल वाला क्वेश्चन मिलेगा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। प्रोग्राम थ्रू आपको आंसर डिराइव करना, वैसे सवाल बहुत कम मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपको शायद मान लो 10 मार्क के लिए डेटा स्ट्रक्चर से आपको 10 मार्क के लिए वेटेज आ गया, उसमें आप कह सकते 1 मार्क या 2 मार्क का वेटेज
ऐसा प्रोग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन से हो सकते। मैं नहीं बोल रहा हूं उसको छोड़ दो बोल के, बट उतना वरी होने का, चिंता होने का जरूरी नहीं। आप आराम से, अगर आपको सी समझ में आ रहे तो आप डेफिनेटली पाइथन कोड समझ सकते। नहीं तो मैं पाइथन के लिए भी क्रैश कोर्स में मैं पाइथन ऑलरेडी पढ़ाया था। आप वो क्लासेस गो थ्रू कर लो, आपको बेटर आइडिया आएगा पाइथन कोड के बारे में। ओके, चल। So what are different tree traversals we have? There are two types of traversals basically. One is called breadth first traversal, and the other is called depth first traversal. Breadth first traversal, depth first traversal. Depth first traversals are subclassified into three types. They are in-order traversal, pre-order traversal, post-order traversal. Breadth first traversal is also known as level order traversal. What are in-order, pre-order, post-order? If parent is visited in between left node or left subtree and right subtree, that is called in order. So इसका शॉर्ट कोड मैं लिख रहा हूं LPR करके, लेफ्ट पेरेंट राइट. Pre-order, if parent node is visited before left and right nodes or right subtrees. So इसका शॉर्ट कोड आप ले सकते PLR करके, parent left right. And what is post order traversal? Parent node is visited after left and right nodes. After left and right nodes means at last. So इसका शॉर्ट कोड आप ले सकते LRP. इसके लिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल पहले ले लेंगे. Let I am taking a binary tree A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Depth first search, depth first traversal, they are related but not same. DFS is different.
This is DFT, depth first traversal. ओके, सो इसके लिए पहले लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होते? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल और ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल क्या बोलते? लेवल वाइज. So level order traversal means top to bottom, left to right. Top to bottom, left to right. So इसका level order traversal क्या होते हैं? root to leaf, left to right. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Now, what would be in order traversal? In order traversal में क्या है? Left, parent, right. So this is parent. This is all left for A. This is all right for A. Now, in this, again, this is parent, this is left. There is no right for B. So, left, parent, right. So, D, parent, B. There is no right, leave. So, left is traversed. Now, parent, A. Now, right. Right is again a subtree. So, apply the same rule. Parent, this is left, this is right. Left is again a subtree. So, parent, left, right. So, left, parent, right. So, left is G, parent is E, right. Right is again a subtree. So, apply the same rule. P, L, R. There is no L. So, P, that is H, then right, J. Now, E का लेफ्ट हो गया, E हो गया, E का राइट हो गया. अब C, पेरेंट C का लेफ्ट हो गया, पेरेंट C विजिट करना है. अब पेरेंट C का राइट. राइट में अगेन ये पेरेंट था, ये लेफ्ट था, राइट नहीं था. सो लेफ्ट, पेरेंट, राइट, दैट इज I, F, there is no right. So this is the in order traversal. बस आप हर सब ट्री में आप ये PLR, LPR, LRP वो फॉलो करते जाओ रिकर्सिवली. नाउ व्हाट वुड बी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल? पेरेंट, left, in the left, parent, left, right. There is no right for B. So parent is visited, parent's left is visited, now parent's right. In this again PLR rule. P, parent is C, P, parent is E, left, G. Now again in HJ, parent, H, left, there is no left, right, J. Now parent, left, right is done, parent, left is done, now parent's right. In this again PLR rule. So F, I. So this is a pre-order traversal. Now post order traversal.
What is post order? Left, right, parent, LRP. So LRP, L, there is no R, P. Now L हो गया, अब राइट R होना चाहिए. So यहां भी L R P, L R P, L ले लो पहले, G, यहां भी L R P, L नहीं था, R ले लो, P को उठा लो, मतलब पेरेंट को उठा लो. अब इसका पेरेंट को उठा लो. अब इस पे LRP, I, नो राइट, सो पेरेंट. नाउ L हो गया, R हो गया, पेरेंट को उठा लो. अब लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, पेरेंट. So this will be post order traversal of this given binary tree. If you are learning it for the first time, it is not that easy to understand or learn. Practice is required. बस आप ये कोड आप रिकर्सिवली अप्लाई करते जाओ तो आपको प्रैक्टिस से फर्स्ट प्रॉब्लम से सेकंड प्रॉब्लम से थर्ड प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होते रहते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होते रहते. ठीक है, प्रणोय, हरे कृष्ण. ओके, let us have one more example. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Everyone, please give me all the four traversals, level order, means breadth first traversal, in order traversal, pre-order traversal, post order traversal. Everyone please try to give me these four traversals. Level order means top to bottom, root to leaf, left to right. So level order will be A, B, G, C, F, H, I, D, E, J, K, L, M. This would be level order. Now in order, this is the left, this is right, and this is parent. This is parent, left, right, parent, left, right, parent, left, parent, there is no left, parent, left, right. So अब आप ये इन ऑर्डर, मतलब इन ऑर्डर का क्या था, लेफ्ट, पेरेंट, राइट. सो ये आप रिकर्सिवली करते जाओ.
L, L, L. So D, R, P, L, R, P. L हो गया, R में L, R नहीं था, P. अब L हो गया, R इन ऑर्डर है ना, एक मिनट, इन ऑर्डर है ना, इन ऑर्डर L P R, L P R, L P R, L हो गया, P R में फिर से L P R, L P R, R नहीं था, अब L हो गया, P R, R is again a subtree, so there is no L. Now P R, in the R again L P R, that is L K M. So this would be in order. Now pre-order. Pre-order means what? Parent, left, right. So parent is first A, लेफ्ट में पेरेंट बी, उसका लेफ्ट में पेरेंट सी. नाउ पी एल आर, डी ई, पी हो गया, एल हो गया, आर एफ, पी हो गया, एल हो गया, अभी आर में पी जी था, एल एच, एल जे, पी एल हो गया, आर में आई, एल आर में पी एल आर, एल के एल एम. So this would be pre-order traversal. And what will be post order? Left, right, parent, LRP, LRP, DEC, LRP, LRP, F, B, L, R, R में L, R नहीं था, P, that is H, L, R, R में LRP लिखो, L नहीं, LRP में L, M, K, I, G, A. So this is the post order traversal. Please check yourself. Okay. Everyone, is that okay? Now,
let us have one problem. Suppose you have got like this. Consider the in-order traversal of a binary tree is so and so, and pre-order is so and so. Then what is post order? So you will get the question like this. आपको गेट एग्जाम में भी ऐसी सवाल मिल सकता है, बहुत बार हमको मिल गया ऑलरेडी. तो क्या करना है, हमको ट्री नहीं दिया, बस दो ट्रैवर्सल दिया था आपको और दूसरा तीसरा ट्रैवर्सल फाइंड आउट करने के लिए बोले. तो आपको क्या करना है, कभी भी याद रखो, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से आप लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना है. प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल से आप पेरेंट नोड को आइडेंटिफाई करना है. सो कभी भी आप ये याद रखना, पेरेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर यूज करना है. लेफ्ट राइट सबट्री से और चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज करना है. Okay, so now let's see this. We are given in order, pre-order. We know that in the pre-order, parent will be first. So A is the parent. Once parent is identified, move to in order. इन ऑर्डर में पेरेंट कहां रहेगा, इन ऑर्डर मतलब क्या है, पेरेंट बीच में रहते, लेफ्ट राइट का बीच में. सो वॉट एवर ऑन द लेफ्ट साइड दे ऑल विल बी लेफ्ट सबट्री, these all will be right subtree. This is parent, right? So C, B, G, E, D, F, H. These all will be on the left. J, I, L, K. These will be on the right. Next. In this, B is first. So, in these nodes, B will be the parent. When B is the parent, parent left, right. So, C will be its left, G, E, D, F, H will be on the right. Next, in the right, J, I, L, K, I is first. So, I will be parent. J, when I is parent, J is on its left side. So, J will be left, LK will be right. स्टेप बाय स्टेप हम ऐसा करते जाना है. नेक्स्ट, in GEDFH,
D is first. So D will be the parent. When D is the parent, GE on the left side, FH on the right side. Same way, in L and K, K is first. So K will be the parent. When K is parent, L is on its left side. So L will be its left subtree. Now, in the next step, A, B, I, C, D, J, K, L. Now, in G and E, E is first. E is first. In E, to E, G is on its left side. So, G will be its left child. Next, in FH, F is first. And H is towards its right. So H will be the right child. So this is the binary tree. ट्रैवर्सल से हम बाइनरी ट्री को पहले डिराइव किए. अब हमको पता है कौन सा ट्रैवर्सल चाहिए, वो ट्रैवर्सल हम दे सकते. अब हमको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल चाहिए. पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसा मिलेगा आपको? लेफ्ट राइट पेरेंट से मिलेगा. लेफ्ट राइट पेरेंट है ना. सो अब इससे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर आप गिने तो C, G, E, H, F, D, B, J, L, K, I, A. प्रैक्टिस से आ जाएगा. So this would be the post order traversal. C, G, E, H, F, D, B, J, L, K, I, A. Option C is the right answer for this question. Got it? So like this you have to solve. I am giving one more question. Here I have given in order, post order. Post order means parent कहाँ रहते? लास्ट पे रहते. सो हमेशा आप ऐसा लास्ट नोड को पेरेंट लेके करना है, ट्राई कर लो. सो आई एम गिविंग दिस फॉर योर होमवर्क. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, let us have the important formulae that are useful in trees. So I'll give the formulae. आप अच्छा सा वो formulae को सीख लो. They will be very useful in solving the gate questions. Okay, so first, in a perfect binary tree, number of nodes at level L will be 2 to the power L. All numbers starts from 0. Okay, वो मैं बोलने का जरूरत नहीं. नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होते. नेक्स्ट,
in a binary tree, if there are x leaf nodes, then number of nodes with exactly 2 children, number of nodes with exactly 2 children will be x minus 1. Any binary tree, perfect, full, complete, skewed, anything, x minus 1. Next, in a binary tree with n nodes, आप n नोड्स से बाइनरी ट्री बनाना है तो मैक्सिमम हाइट पॉसिबल विल बी n minus 1 and minimum height will be log n plus 1 base 2 seal value. अगर आपको हाइट मिले in a binary tree with height h to form minimum nodes required would be h plus 1 and maximum nodes required would be 2 power h plus 1 minus 1. Okay, and the number of unlabeled binary trees, the number of unlabeled binary trees possible with n nodes will be equal to 2n by n plus 1, nth catalog number we call it as. If the same I want labeled binary trees, the number of labeled binary trees possible with n nodes, that will be equal to 2n by n plus 1 multiplied by n factorial. Nth catalog number multiplied by n factorial. So these are important formulae that will be useful for you. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा कभी कभी, तब ये फॉर्मूले आप याद रखे यूज किए तो आपको आंसर आ जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने पूरा ट्री फंडामेंटल्स डिस्कशन किए थे, जिसमें पहले हम टर्मिनोलॉजी, डिग्री बोले तो क्या है, एज, सिबलिंग्स, हाइट, डेप्थ, लेवल, ये पूरा टर्म्स को समझ लिए. उसके बाद टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज, इसके बाद
ट्री ट्रैवर्सल्स, जिसमें ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट में इन ऑर्डर होगा, प्री ऑर्डर होगा, पोस्ट ऑर्डर होगा. So what are those traversals? How we derive those traversals from the given tree we have seen, and some formulae that you can use directly on trees we have discussed. So we will continue this in the next class with binary search tree and binary heap. Okay? So आपका होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप ये टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके उधर आप पोस्ट कर सकते हैं. उधर बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेगा आपको विच आर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम गेट एग्जाम. सो इट इज लाइक ए फ्रेंड्स कम्युनिटी ग्रुप. सो आप ज्वाइन हो जाओ. उधर आपका वैलिड डाउट्स पोस्ट कर लो, क्वेरीज पोस्ट कर लो. अपने आप आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा. नहीं तो मैं रहता हूं, मैं आपको रेस्पॉन्स देता हूं. ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन. होप सारे कॉन्सेप्ट्स आज जो भी डिस्कशन किए थे हम, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गया, अच्छा सा रिवीजन हो गया. तो हम ये वैलिड प्रोडक्टिव डिस्कशन को कंटिन्यू कर लेंगे अगले क्लास में. ठीक है? थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर योर very patient and active listening attendance throughout the class. See you tomorrow. Till then, have a great time. Have a great day. Take care. Bye bye everyone. Jai Hind.